Hello, dear students. Very good morning to everyone. Hope you all are doing well. So, today in this video, we are going to discuss about sexual reproduction in plants. And in our previous video, we have already discussed about asexual reproduction in plants. So, now sexual reproduction. As you know, that reproduction means the process of producing young ones of their own kind, right? So, here sexual reproduction. So sexual reproduction, both male and female gametes fuse to form seeds and that eventually develop into new plants. So here we are talking about sexual reproduction in plants. So here both male and female gametes in plants fuse together to form seeds, and then the seeds develop into new plants. Now, what is the reproductive part of a plant? So, flower is a reproductive part of a plant. So, we can say that in plants, sexual reproduction takes place by the most attractive part, which is flower. Now, let's try to understand the parts of flower. So, here, as you can see in this picture, parts of flower. So, what are the parts of flower? Sepals, petals, stamens, and carpel. These four parts are present in the flower. And here a stamen. Stamen has an anther. You can see here this is anther. Okay. And by a long stalk called filament. So this is an anther and this is a filament. And you can see here the structure of the anther. Anther is look like this, and this is anther and this is a filament. So stamen is a male part of the flower. Okay, so this is a male part of the flower and it contain pollen grains. Pollens are male reproductive unit of the flower. And here pistil, this is a pistil. Pistil is a female part of the flower. Okay, and pistil have three parts: stigma, style, and ovary. So here you can see the swollen part. This is the ovary. So stamen is a male part of the flower, and pistil, which consists stigma, style, and ovary, is a female part of the flower. As you can see here, this is a stamen and this is a male part of the flower. Stamen contain anther and filament, and anther contains pollen grains, and this is a pistil. Pistil is a female part of the flower, and pistil have three another part: stigma, style, and ovary. Okay, ovary have ovules inside it. All right. So this is a stamen, and here you can see anther and filament is both the part of the stamen, and anther contains pollen grains which produce male gametes, and a pistil contains ovules. And actually pistil consists stigma, style, and ovary contains ovules. Ovary contains one or more ovules, and जो ये ओव्यूल्स है इट इज़ एक्चुअली ए फीमेल गैमेट्स, और जो भी एग फॉर्म होता है वो ओव्यूल में ही होता है. ठीक है ना. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट के फॉर्म में आते हैं. नाउ सम फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कंटेन करते हैं बोथ पार्ट्स, मतलब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. Okay, means stamen and pistil. Stamen and pistil both part, male and female part contain करते हैं. मीन्स जिनमें ये दोनों पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाई मीन्स टू. ओके, सो जिसमें दोनों पार्ट यानी कि मेल
part and female part, means stamen एंड पिस्टल बोथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, रोज है आपका, सो ये क्या है, बाइसेक्सुअल है. ऑलराइट. एंड सम फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स दे हैव ईदर द स्टेमन और पिस्टल. मतलब या तो उसमें स्टेमन होगा या फिर उसमें पिस्टल होगा. सो दिस फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ओके. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, मेज, वाटरमेलन. सो इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स उनमें या तो आपका स्टेमन होगा या फिर आपका पिस्टल होगा. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? सो पॉलिनेशन, you have already studied about pollination. Pollination is a transfer of pollen grain from one flower to another. ओके. सो जब ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो उसे कहते हैं पॉलिनेशन. ओके. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड द नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? As you can see this diagram, this picture, so here you have a little bit idea about self pollination and cross pollination. Okay. So self pollination means the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. Okay. So of the same flower or to the stigma of another flower on the same plant. दूसरा फ्लावर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. Now if we talk about cross pollination, so cross pollination means the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower on another plant. So this type of pollination is known as cross pollination. यहाँ पे cross हो रहा है, means जो pollen grains हैं वो एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो दिस इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन. ऑलराइट.